Going live.
The symbol dawn. It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched, immobile, upon silence march. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless muse. The abysm of the unbodied infinite, a fathomless zero occupied the world. A power of fallen, boundless self away between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and long to reach its end in vacant nought. As in a dark beginning of all things, a mute, featureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging forever the unseen will, cradled the cosmic drowse of ignorant force, whose moved creative slumber kindles the suns and carries our lives in its somnambulist will. Athwart the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dreams, earth wheeled, abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her feet. The impassive skies were neutral, empty, still. Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, insistent, dissatisfied, without an aim, something that wished but knew not how to be, teach the inconscient to wake ignorance. आरंभ करें।
श्री अरविंदो समस्त नमस्कार। आज 15 अगस्ट 2023 आमे आमर ये सावित्री रीडर्स फाउंडेशन रे आज गोटे स्पेशल सेशन जोटा श्री अरविंदों 151तम जन्म जयंती उपलक्षे आम मैंने एकत्रित होती किंतु in continuance to all what have been for Sri Aurobindo's 150th birth anniversary last year टी समस्तन का पाई गोटे छोटो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भलिया थिला जो थरे कलेक्टिव एफर्ट्स रो गोटे विशेष भूमिका थिला। अनेक संगठन तरफ अनेक जमती ऑर्गेनाइजेशनल वे रे हो किंबा इंस्टीट्यूशनल वे रे हो समस्ते श्री अरविंदों कार्यधारा तांकर चिंताधारा तांकर लेखाठू आरंभ करिकी तांकर प्रत्येकटी जोंठी जोंठी विश्व सारा तांकर उपस्थिति तांकर उपलब्धि गुड़िक को सेलिब्रेट करा जाइछि से गुड़िकर कार्यक्रम गत एक वर्ष धरी चारिआडे हेई आसुला। ता प्रीवियस ईयर मध्य जेतेबेले आमे 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करथिले किंतु एटा 151तम आ तेणु गला थरा हम संडे क्लास रे भी से उल्लेख करथिली जे ये गोटे एमती पीरियड रो बिगिनिंग बा ऑनसेट जो थरे की इन्वोकेशन आउ reply from the above would be a little transformative smooth कहीं कारण आमे समस्ते गोटे एपरी जानतरे हो बा अजानतरे हो समस्ते गोटे एपरी जुग भितर को प्रवेश करुचंती जो जुगर की मेटेरियली सटलनेस बा सूक्ष्मतार जो कैरेक्टर टी ग्रो करिवारे लागिछि। तेणु ये जो सूक्ष्मता प्रति मनुष्यर गोटे एक्सेप्टेंस रो भाव धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि तार रिजल्ट होउछि जे सीए सब प्रकार रो सूक्ष्म उपलब्धि गुड़ी को अधिक रु अधिक विश्वास करिवो। तेणु जो तार कॉल को जो रिप्लाई गुड़ी को आसीबो से गुड़ी को ता पई अधिक हृदबोध बा बोधगम्य हेई परिबो से बुझी परिबो से कथा उडा मनुष्य जो जिनस गुड़ी को केबे कल्पना कर नथिला केबे बुझी पारु नथिला आज से गुड़ी कर संभावना एते तीव्र हे जाईची जे ताकू से गुड़ी को सब बुझीबा पई आ विशेष माने सेई पूर्व भली आ एते परिश्रम करबा को पड़ू एबे ता पई सूक्ष्मता को ग्रहण करबा किंबा एई मटेरियल साइंस को छाड़ी अन्य किछि चिंता करबाटा आ टिके सहज हे जाईची। ये सब पॉसिबल एति पई हेची कारण मन निजर बाकी फैकल्टी गुड़ी को सब खोलिबा को आरंभ करिछि। जो मनेव मनुष्याणाम बोली हमें कहते मन मनुष्यर गोटे विशेष कैरेक्टर भाबरे मन थिला बा अछि आउ ए मन द्वारा ही तार परिचयटी सृष्टि हेछि मनुष्य बोली सी ए मनर तार फ्रेमवर्क भितरु बा जोड़ा तार हाईएस्ट एपर्यंत उपलब्धि हेछि तार तत्वगत से होछि मन मनर साहाय्य से सब बुझुची मनर साहाय्य सब कर्मर फ्रेमवर्क बा तार फॉर्मूलाटी तैयारी करुची मन द्वारा प्राण सहित युक्त होउची मन तार गोटे मन शरीर प्राण नेता भलिया सी ता संगे गोटे तार आइडेंटिफिकेशन एते स्ट्रांग हे जाईची तार एई पार्ट ऑफ द बीइंग सहित जे ही इज अ मेंटल एनिमल मध्ये आमे कहूछु मनुष्य आउ किछि नुहे तार मन जहा सी से ए मन शेष पहाच नुहे ए मनठू आउरी अधिक ऊर्ध्व ए मनठू विवर्तनर प्रक्रियार आउरी किछि सोपान हमकु चढ़ी जीवाकू पड़िबो आउ ए सब हमकु धीरे धीरे ओवर माइंड और सुपर माइंड आड़कू नहीं की जीवो। तेणु से जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी रूपांतर जो प्रक्रिया टी ये एपरी भाव में अनफोल्ड हेबाकू लागिछि धीरे धीरे एमती से खोलिबा को आरंभ करिछि निजको जे आम पई ए कालटी ए समयटी ए जो चेतना धर्मर जो वातावरणटी रही
বা କନସିୟସ୍ ଏନଭାयरमेंट ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବ୍ରିଦ୍ କରିବା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାଧନା। पूरा वातावरण टी पूरा एनवायरनमेंट आम चारिपटे एमती एनर्जीज गुड़िक द्वारा एनवलप्ड होगी रही जे आम प्रत्येक टी मुहूर्त किसी ना किसी कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्व करुचु किसी कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व करुचु। तो श्वास प्रश्वास भलिया चेतनार एक्सचेंज होची इंटरचेंज होची इंटर एक्सचेंज होची परिस्थिति सह व्यक्ति सह वस्तु मानक सह। आज कथा गुड़िकर सिग्निफिकेंस टा खूब अधिक तेणु से लाइट रे आमे जोटा आगु पढ़ी बहुत थर किंतु आज पुणी थे आजिकार परिप्रेक्षी आज आम जगत को जमी देखुं श्री अरविंद भाषा रे से पांचटी स्वप्न को आउ थे मन पकेबा द 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरविंद। आ देखिबा कि कथाटा श्री अरविंद एते पुराना थिले भी आज केते रेलिवेंट लगुच। August 15th, 1947 is the birthday of Free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age. But we can also make it by our life and acts as a free nation, an important date in a new age opening for the whole world, for the political, social, cultural and spiritual future of humanity। एक कथा श्री अरविंद सेते बेले कहउछंती जे 1947 परे भारतर गोटे एपरी कालखंड बा जुगटी आरंभ होबाकू जाउची जेउथरे राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा मनुष्यतार भवितव्य को लेकिन अनेक नूतन कार्य ग्रहण करा जाई पारे। आज मध्य आम माने एमती गोटे जंक्चर रे आसी पहुंचती जे एठू आमर कार्यपंथाटी आमर चिंताधारा आमर विश्वास एगुड़िक सब क्यों मार्ग जाइकी जीव ये गोटे नीति निर्धारण करथुवा समय आगु को आमर आध्यात्मिक नीति किपरि हबो आमे हाउ आर वी गोइंग टू गाइड आवर प्रोग्रेस और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट टाइम फ्रेम भितर आम माने आसी की पहुंची। August 15th is my own birthday, Shri Aurobindo कहउछंती, and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance। ये एते बड़ significant हे जिवो ए दिनटी अगस्त 15 मो जन्म दिनटी ये खूब विशाल कथा। I take this coincidence not as a fortuitous accident but as the sanction and seal of the divine force that guides my steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition। ये कौन सी एक्सीडेंट नुह ये से परमंकर जेमती उठे सील बा निर्देश स्वरूप। Indeed on this day I can watch almost all the world movements which I hoped to see fulfilled in my lifetime, though then they looked like impracticable dreams arriving at fruition or on their way to achievement। In all these movements, Free India may well play a large part and take a leading position। कहते मोर केते एमती इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स गुड़िक रही भारत को नहीं जहाँकि एबे बोधे ये फ्री इंडिया रे से गुड़िक संभव हो पारिबो और इंडिया गोटे लीडिंग पोजीशन नहीं पारिबो। The first of these dreams was a revolutionary movement which would create a free and united India। ये पांचटा भितर प्रथम तांकर स्वप्न थिला जे इंडिया मुक्त हबो, स्वाधीन हबो आउ गोटे यूनाइटेड इंडिया हे कि जेमति सब आग राजा मानकर छोट छोट राज्य रे विभाजन है कि 500 केते राजा माने राज्य सब थिला ना छोट छोट राजांकर कैप्टिविटी रे बट से यूनाइटेड हे कि से अखंड भारत टी तयारी हबो जे एटा श्री अरविंदंकर गोटे स्वप्न would create a free and united India। India today is free but she has not achieved unity। At one moment it almost seemed as if in the very act of liberation she would fall back into the chaos of separate states which preceded the British conquest। But fortunately it now seems probable that this danger will be averted and a large and powerful, though not yet a complete union will be established। जदियो complete नुह किंतु गोटे union टे निश्चय establish हबो। Another dream
was for the resurgence and liberation of the people of Asia and her return to her great role in the progress of human civilization. Asia has arisen. Large parts are now quite free or are at this moment being liberated. Its other still subject or partly subject parts are moving through whatever struggles towards freedom. এটা ସେତେବେଳର କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛିଟା ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରିଡମ ଆସିନି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଇଏର ଅଛନ୍ତି ଚାଇନା ଇଜ ୱାନ୍ ସଚ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯଦିଓ ରିପବ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରେସରରେ ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ରେସର ହଉ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେସର ହଉ म्यांमार एबे पर्यंत स्टेबिलिटी नहीं पाकिस्तान रो अवस्था में जानी चाहिए तो एशिया एज अ पावर जेमती इंडिया फ्री हला इंडिया यूनाइट हला सेमती एशिया भी गोटे बड़ शक्ति भाव रे ऊपर को आसीबो ए जो स्वप्नटी श्री अरविंदंकर होची द्वितीय स्वप्न द थर्ड ड्रीम was a world union forming the outer basis of a fairer brighter and nobler life for all mankind. That unification of the human world is underway. There is an imperfect initiation organized but struggling against tremendous difficulties. But the momentum is there and it must inevitably increase and conquer. Here too, India has begun to play a prominent part. And if she can develop that larger statesmanship, which is not limited by the present facts and immediate possibilities, but looks into the future and brings it nearer, her presence may make all the difference between a slow and timid and a bold and swift development. Nationalism will have fulfilled itself and lost its militancy and would no longer find these things incompatible with self preservation and the integrality of its outlook. A new spirit of oneness will take hold of the human race. It's relevant देखो ଯେତେବେଳେ इंडिया सोबर कंट्री टे कहा संगे किछि हमर माडगोळ नै झगड़ा नै हमें कहा को अटैक करिवार नै हमु किछि ऑक्युपाई करिवार नै हमकु यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रे भी प्लेस दरकार नथिला एते नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से समय रे जवाहरलाल नेहरूंकर जेतेबे इंडिया गोटे कन्फर्मिस्ट पोजीशन नै कि बसी गला तेतबे सी जेमति विश्व वर्ल्ड ऑर्डर रे तार गुरुत्वटी जेमति कमी गला इंडिया एज सच ए लार्ज पॉपुलेशन थाई कि मध्य आ एते बड़ तार एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कल्चरल हिस्ट्री स्पिरिचुअल हिस्ट्री आउ मैनकाइंड रो जेते एमति कि बड़ बड़ फिलोसोफर माने लिखि जति जहा भारत रो आकाश तळे नाही विश्व रे कोठी नाही सो इंडिया हाउस्ड एवरीथिंग हे कि मध्य सेतेबेले इंडिया रो ए ऑब्सर्जेंस टाकू कोठी भी एते प्रोमिनेंस मिली नथिला एबे किंतु ए नेशनलिज्म राइज ऑफ नेशनलिज्म द्वारा जहा कि मिलिटेंट नुह किंतु राष्ट्रीयतार बोध आमे गोटे राष्ट्र और राष्ट्र प्रति जो प्रेम राष्ट्र प्रति जो समर्पणर भाव एते तीव्र हेई आसिला जे आजिका समय रे श्री अरविंदंकर ए कथाटी देखंतु here too India has begun to play a prominent part if she can develop that larger statesmanship आजिका संदर्भ रे देखिया गले जो भारतर नेतृत्व रही तार जो लार्जर स्टेट्समैनशिप रही विश्व दरबार रे प्रत्येक टी मल्टीलैटरल फोरम रे भारतर कथाटी जो रूप रे ग्रहण करा जाउछि ये श्री अरविंदंकर विजन जे फ्यूचरिस्टिकली कहूछि जे भारतर एपरि गोटे पोजीशन टी अवश्यंभावी के ताको अटकई परिबे एनादर ड्रीम देखंतु प्रथमे भारतर निजस्व स्वाधीनता कथा कहले तापर कॉन्टिनेंट को आसिले एशिया कथा कहले तापर वर्ल्ड रे भारतर पोजीशन कथा कहउछन एबे पुणी फेरी आसी आध्यात्मिक भारत को नेकी श्री अरविंदंकर स्वप्न कोन कहउछन एनादर ड्रीम द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बिगन India's spirituality is entering Europe and America in an ever increasing measure. That movement will grow. Amid the disasters of the time, more and more eyes are turning towards her with hope, and there is even
an increasing resort not only to her teachings but to her psychic and spiritual practice. भारतर आध्यात्मिकतार जो संप्रसारणटी यूरोप और अमेरिका को केवल नुहे समग्र विश्व को एपरी भाव में व्याप्त हो जे सबु सबु देश सबु महादेश गुड़िक भारत को तार स्पिरिचुअल सेंटर भाव में ग्रहण कर गोटे आध्यात्मिक केन्द्र उत्स हो भारत आउ ये स्वप्नटी श्री अरविंदर भाषा जदि आम एबे रिफ्लेक्ट करके देखुचंती जे देयर इज इवन एन इंक्रीजिंग रिजल्ट नॉट ओनली टू हर टीचिंग्स बट टू हर साइकिक एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो पूर्वर जो आराधना बा साधनार जो मार्ग थिला ताकू आध्यात्मिक भारतर संज्ञा रे विश्व गणुनी जो विश्व सारा योग दिवस पालन हला ये कौन सी आध्यात्मिक कौन सी पूजा पाठर तो प्रक्रिया नथिला ये व्यक्तिगत भाव में जनकर शारीरिक स्वच्छलता सह गोटे मन प्राण शरीर एकीभूत हेबा केंद्रित हेबा जोगर मूल उपदेश गुड़िक को ग्रहण करने जीवन रे याकू नहीं कि कितने बड़ विप्लव हो गला लास्ट 7-8 वर्ष रे जे आज जोग जो जोग टीचर मान को आमे इंडिया रे पचारनु दे आर माने अर्निंग इन thousands and crores in foreign countries. America रे यूरोप रे जो भलो जोग टीचर जदि if you are certified from somewhere recognized from somewhere then you earn like anything. तो भारतीय ज्ञानर the traditional knowledge systems that India has एक prominence मिलुछि. The final dream was a step in evolution which would raise man to a higher and larger consciousness and begin the solution of the problems which have perplexed and vexed him since he first began to think and to dream of individual perfection and a perfect society. जेबेठू मनुष्य स्वप्न देखिबा आरंभ करछि गोटे परफेक्ट सोसाइटी पई मनुष्य सिविलाइजेशन टी केमिति डेवलप कला जेतेबेले से जंगल रे थिला जेतेबेले से निया कोन जानला टूल्स टिके तयारी कला मेकानिकल एक्टिविटीज तार स्टार्ट हला खाद्य केमिति ग्रहण करा जाय से सब विषय रे जानला ये सबु चेतनागत तार जो विवर्तनर प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप से उठी आसुतला ये सबु भितरे से तार चारिपटे गोटे प्रकार परफेक्शन ही बिल्ड करी करी जाउतला एबे आम पई परफेक्ट लाइफ कहले हमें कोन बुझिबा रोटी कपड़ा मकान ये तीनटा तो फुलफिल हो जिवो किंतु ता संगे जो पारिवारिक सुसंपर्क समाज सहित सुसंपर्क निजर जो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी सेठी समस्त संगे इंटरपर्सनल रिलेशंस गुड़िक याकू नहीं कि तार जो परफेक्शन रो इच्छा गोटे हेल्दी आउ वेलनेस हेल्थ आउ वेलनेस बेस्ड लाइफ टे केमती से भलरे बितेइबो ता प्रति तार जो चिंता और आकांक्षा एस्पिरेशंस गुड़िक रही ये सबू मनुष्यर चेतनार आरोहण द्वारा ही संभव हो जितेबले यही कॉन्शियसनेस रु से टिके हायर और लार्जर कॉन्शियसनेस भितर को प्रवेश करिवो सेतेबेले ता पई ये सबु जिंस आउरी सुगम हो जो श्री अरविंदर ये पंच स्वप्न is indeed something for which the entire humanity should be grateful to Shri Aurobindo. Shri Aurobindo को ग्रेटिट्यूड जणेबार कौन मार्ग हो पाए ये ग्रेटिट्यूड शब्दटी कौन आमे ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता बोली कहू कौन कृतज्ञता कृतज्ञ काहे हब कृतज्ञ कहा हब कृतज्ञ केमिति हब यही प्रश्न गुड़िक जो आम ग्रेटिट्यूड विषय कहूँ आम मन को आसे ग्रेटिट्यूड जितेबाला भाई कहले कि ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड ऊपर कहबार अछि जानिबा दरकार कि श्री अरविंदर व्यक्तित्वटी केते विशाल आमे वी शुड बी फीलिंग लकी बा फॉर्चुनेट कि आमे श्री अरविंदो जस्ट एज अ स्पिरिचुअल मास्टर बोली जानि श्री अरविंदर अनेक फैसेट्स रही लाइफ श्री अरविंदो एज अ राइटर पोएट भी अछि श्री अरविंदो एज अ फ्रीडम फाइटर
Sri Aurobindo as someone who was highly qualified in his personal capacity. आध्यात्मिक मार्गटी श्री अरविंदर वा श्री अरविंदर आध्यात्मिक उपलब्धि टाक जदि किछि समय पय हमें साइडलाइन भी कर दबा जदियो ताकु छाडी कि श्री अरविंद हम पय अनडिफाइंड किंतु तथापि श्री अरविंदर को व्यक्तित्व एते विशाल जे तार गोटिए क्ष माने सुतार खियो को धरी की आलोचना करले आमे बसी की मास मास बसी की आलोचना करि परिबा कि व्हाट ही अकम्प्लिश्ड इन हिज टाइम किंतु जने अवतारिक एस्पेक्ट रु जते बेला हम श्री अरविंद को बुझुचंती सेते बेले ए कृतज्ञतार कथाटी को टिके रूप देई भगवान कर अवतार नेबाटी पृथ्वी पाई बा मनुष्य जाति पाई केते आवश्यक आमे समस्ते गोटे प्ले ऑफ फोर्सेस भितर अछि बेले बेले जो बड़ा जेगुडी सब गुड फोर्सेस अछंती बा सपोर्टिव डिवाइन फोर्सेस अछंती से माने हमकु एपरि भाबरे घेरी की रखंती बा हमकु एमिति चैनलाइज करंती जे हम पाई सेही फोर्सेस गुडी को प्रति ओपन हेबा गोटे हायर कॉन्शियसनेस को उठी जिबा चेतना मार्ग रे टिके ऊर्ध्व को चली आसीबा एसु भारी सहज होई जा सेही मोमेंट्स गुडी करे बहुत जनकर गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशंस भी घटी जाए किंतु बेले बेले एमती इविल फोर्सेस माने भी अछंती जो माने कि हमको सराउंड करिक रखंती आ हमें तांकर ट्रैप रे भी पड़ी जाऊ तेणु आमे जीवन हमर प्रत्येक टी दिनचर्या भितरे एमती गुड एंड इविल फोर्सेस करो एई लीला भितरे बा प्ले भितरे आमे निजको नेविगेट करिक चली छंती बेले बेले मनुष्यर क्षमता बाहर इविल फोर्सेस माने एते एपरि एक तांडव सृष्टि करने को आरंभ करती जे भगवान हृदयंगम करती भगवान चिंता करती जे मु जो मनुष्य समूह को जो लेवल को नेबा को जाउची जदी आज ये इविल फोर्सेस माने ताको माडी बसंती ताले सी जेते ऊपर को आसीची बहुत तळ को खसी जिवो तेनो उद्धार करबा पई निजर सेई करुणा बा तांको कंपैशन रो ये से नाना प्रकार रो अवतार ग्रहण कर केवल विष्णुंकर दशावतार कथा नुह अनेक अवतार भागवत महापुराण रे विष्णुंकर 24 अवतार विषय लिखा है तो अनेक थर से अवतार नहीं कि एथि पय आसंती कारण एंटायर मैनकाइंड को तंकु स्टेबल करिवार अछि ताको तळ को जीवा को दियंती जदि हमें केवल सत्य युग रे तो बहुत सारा अवतार नहीं छै हम त्रेता युग कथा कहबा जोठी राम अवतार हेछि सेठी कोन राक्षस मानकर पृथ्वी ऊपर तांकर जो अत्याचार टी इते तीव्र हो जाइथिला जे गोटे क्लीनजिंग दरकार पड़ुथला पूरा निर्मूल करने को दरकार पड़ुथला पूरा तांकर रेस्ट तेनु भगवान निजे संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम रामंकर अवतार रे आसी मनुष्यंक भितरे रही तांकर भितरे बसवास करी केते राक्षस आ एमान को सब सी रामंकर जीवन जो देखिबे ताले आरंभ रु जेबेठु सी विद्या तांकर सरीला गुरुकुल रे शिक्षा सरीला घर को आसी पहुंचती जस्ट किछि दिन जाईछि विश्वामित्र आसी कि नै गेल कहले हमको जीवा को पड़िबो तारकाबद्ध ये सब से आरंभ होईछि सीता सहित वनवास परे जेमती जेमती रावण पाखु जाई पहुंचीचंती पूरा इंडिया टा सारा देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज इन हिस्ट्री टीवी 18 देखिबे सॉरी डिस्कवरी प्लस केमती राम पूरा इंडिया सारा जाइचंती कर्नाटक तमिलनाडु देकी अप टू महाराष्ट्र पर्यंत विंध्याचल देकी राउ जुआड जुआड जाइछन सेट सेट राक्षस मानकर रेस गुडी को सब नष्ट करी करी जाइछन और लास्टली इट वाज लंका व्हिच वाज पुट इनटू फ्लेम्स कृष्णंक अवतार जेतेबेले देखुचंती देखुचंती पृथ्वी पृष्ठ रे राक्षस नाहंती काई कोठी कादे कचित अछंती किंतु मनुष्य ही धीरे धीरे ता भितरे राक्षस मानकर गतिवृत्ति को आपणेबारे लागिछि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग थरे आलोक दांकर स्पीच रे ही वाज मेंशनिंग बट आई रिमेंबर कि सत्य युग रे कोन हला कि पृथ्वी वाज इन द मिडिल स्वर्ग रे असुर माने आउ पाताल रे राक्षस माने सब बा नरक रे सब राक्षस माने सब पाताल रे सब थांती आ से माने झगड़ा करबा पे पृथ्वी पृष्ठ को आसंती आउ सेठू जदि राक्षस माने जितंती तो स्वर्ग को जानती जदि देवता माने हरांती तांको पुणी आउथरे पाताल रे नेकी पकई दियंती
तो पृथ्वी वाज जस्ट अ बैटलफील्ड जमती जमती त्रेता युग आसिला राक्षस माने पृथ्वी को पळे आसिले भगवान को भी पृथ्वी को आसिया को पड़ला तेणु अर्थ रे ही पूरा प्लेटी अनुष्ठित हैला जिते बेले द्वापर युग आछि सेते बेले पृथ्वी आउ नै गोटिए फैमिली भितरे अपोजिट फोर्सेस माने आसी गले कौरव पांडव महाभारत रे युद्ध करबा को पड़ला फैमिली भितरु इविल फोर्सेस मानकु बा पाप पुण्य रो संज्ञा एमती हे गेला से समय रे जे धर्म अधर्म रो संज्ञा एमती हे गेला जे अधर्म को परिवार भितरु ही क्लींस करबा को पड़ला महाभारत रे कली युग रे इट इज मोर डिफिकल्ट कारण गोटिए मनीष भितरे गुड एंड इविल फोर्सेस बोथ अछन सो नाउ द बैटलफील्ड इज आर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ आउ बाहर कोठी नहांती राक्षस माने कि देवता माने ई मनुष्य ही देवतुल्य ए मनुष्य ही राक्षस रो प्रभाव दउछि तो मनुष्य को प्रत्येक टी मुहूर्त रे निज भितरे गोटे गोटे रामायण महाभारत रो युद्ध लड़िबा को पड़िबो इभली गोटे समय रे श्री अरविंदंकर अवतार आसीबाटा कहीं की दरकार पड़ला कारण मनुष्य निजर से मेंटल कॉन्शियसनेस टी एते व्याप्त बा एते शक्तिशाली नथिला जे सी एई जो वार टी ताकू लड़िबार अछि आगु को जाई की तार ता पई कोनोसी प्रस्तुति थिला से प्रस्तुत नथिला मनुष्य आजिका समय रे विदाउट श्री अरविंदोस इंटरवेंशन जदि हम गोटे जुग करचंती चिंता करचंती इट वुड हैव बीन सम 7th और 8th वर्ल्ड वॉर भी सरी जानतानी दीटा हे कि रही गला बोले हम कहू ना दीटा केते वर्ल्ड वॉर सरी जानतानी कारण मनुष्य भितरे सेही कैपेबिलिटीज नथिला आ अर्थ मैटर भी प्रस्तुत नथिला एते जे ए इविल ऑफ गुड फोर्सेस मानकर बैटल टी को से संभाली परिबो केते एक्सप्लोजन सही सरंतानी ये गोटिए हिरोशिमा कथा हम जानि छथि केते एटम बम पड़ी सरंतानी को कॉन्शियसनेस टी होल्ड बैक करी कि रखुची वर्ल्ड लीडर्स मान को कि हम पाकर न्यूक्लियर पावर थिले भी हम कोडी पकेबन they have strengthened themselves but not applied it kahi ki eta ei jinsa ti sambhav hela it is mother and Sri Aurobindo's intervention ह्यूमैनिटी को केमती होल्ड कर आ ह्यूमैनिटी को होल्ड करी रखी नांदी ताको आगु को गोटे जर्नी बतई दै छथि कि एठी रहिबार नै वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कवर and for that mother and Sri Aurobindo has taken immense pain बहु जंत्रणार सहित सम्मुखीन होइछथि पढ़ी भी आज 12 years with श्री अरविंद अल्प पढ़िबा निरुद्धांकर लेखा जो 12 वर्ष श्री अरविंदंकर गोडटी जो थाई बोन फ्रैक्चर हैला तापर से तांको संगे रे लेखचिंती गुरु गृह वास हाउस ऑफ द लॉर्ड्स गुरु को घरे रहिबा आम पे आजिकली छोट कथा कि गेस्ट हाउस टे थिबो आमे गुरु को पाखरे जाई रहि गले कि गुरु आम घर को आसिले गेस्ट हाउस रे रहि गले आम पे एटा उठे आ सेही एस्पेक्ट ता नाही किंतु सेते बेले मां श्री अरविंदन को रूम रे 2 मिनिट जाई कि बसी परिबा भी बहुत बड़ कथा थिला सो फिल्ड विथ एनर्जीज आ तांकर ता भितरे जो एक्सचेंज ऑफ कॉन्शियसनेस टी एते तीव्र थिला जे किछि समय मात्र सेठी रहि परिबाटा भी बहुत मीन एबे एते दिन परे जिते एते वर्ष परे दिन परे कोन एते वर्ष परे भी जेतबेला हमें टिके 5-10 मिनिट पई भी श्री अरविंदन को रूम को जाउचंती सी द प्रेजेंस लुक एट द प्रेजेंस कितने स्ट्रांग एबे भी सेही दर्शन डोर सामना रे क्रॉस करी गला बेले को मां श्री अरविंदन को प्रेजेंस टी कितने सॉलिड सेति की छाडंतु केवल मां को चेयर रो दर्शन टी कितने स्ट्रांग हम तार प्रभाव टी चेतना ऊपर केते स्ट्रांग मोर कहबार अभिप्राय होछि से तेणु जी 12 वर्ष श्री अरविंदन को खट तळे बसी बसी जार कटि थिबो तार चेतना रु जो जिंस गुडी को बाहरी थिबो से लेखा रे ही अनुभूति अलग तेणु मां श्री अरविंदन जो कष्ट जो जंत्रणा जो धैर्य जो उपलब्धि गुडी को विषय आम आलोचना करुचंती बा पढ़ुचंती बा तांकर लीलार व्याख्या कर दउचंती टिके बा पढ़ी दउचंती टिके से विषय रे सेटा ही सबुठ बड़ कृतज्ञता टू एक्नॉलेज दैट दे हैव अचीव्ड सो मच फॉर अस मा लिखचंती ना श्री अरविंदंकर समाधि रो ये ऊपर ही हु हैज अचीव्ड इते से आम पे अकम्प्लिश कर दे कि जाइचंती जे आजी आमे ये जो एते सुरुखुर वातावरण एते
सुविधार वातावरण भितर आम सब बसवास कर ये सब संभव ही नथिला संभव ही नथिला आपण एटा लेखिकी रखते आमे गोटे संपूर्ण डिफरेंट वर्ल्ड रे रोचंती एंड इट इज ऑल फॉर मदर एंड श्योर आर्थर एटमॉस्फेयर भितर ये जो स्टेबिलिटी ये जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टे ट्रांसफॉर्मेटिव एटमॉस्फेयर टे जदी आज अच्छी ताले इट इज देयर इंटरवेंशन देयर कंट्रीब्यूशन एंड देयर अचीवमेंट जे वी आर लिविंग इन सच ए वर्ल्ड ऑर्डर ता प्रति कृतज्ञता जणेबा आम निरोध भाषा मु सब इट इज माय स्ट्रांग बिलीव कि मां श्री अरविंदो को कृतज्ञता जणेबार निजस्व किछि गोटे धारा थाई पारे किंतु याको व्याख्या करा जाय पारे कोन कृतज्ञता जणे हम कृतज्ञता कोन केते बुझिबा तांको अवदान को कृतज्ञ देई परिबा आ कृतज्ञतार केउ श्रेष्ठ भाव देखै परिबा जे के जणे ताको आइडेंटिफाई करियो कि हां मु एमिति कृतज्ञताटा जणाय बोली ये कौन कम कृतज्ञता आम को जिनस प्रति आम कृतज्ञता जनइबा बेले बेले जो तांकर गोटिए लाइन गोटिए मेसेज गोटिए पारा पढ़ीदेला मात्र आम भितर एते बड़ चेंज आसी जाउची ये सब को ग्रहण करबा ही ये सब को बा तांको प्रदत्त मार्ग रे चलीबा ही होची सबुठ बड़ कृतज्ञता इफ वी कैन वर्क ऑन व्हाट ही हैज सेड what he has shared what he has written that हो सुंदर किछि भी हे परिबो नाही आमे किछि लाइंस चिंता करंतु जेबे श्री अरविंदंकर 1950 रो कथा ये से वर्षर दर्शन परे ये निरोधा लिखुचंती फ्रॉम सावित्री a day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom and hers in that tremendous silence lone and lost cry not to heaven for she alone can save she only can save herself and save the world कहले जते बेले श्री अरविंद बुक ऑफ फेट रे उडा लिखिले आमे यार संपूर्ण माने बुझी पारनु कि मां को कहि कि लिखुचंती आ शी ओनली कैन सेव हरसेल्फ एंड सेव द वर्ल्ड माने कोन काने श्री अरविंद थिले तेनु सेही गुरुत्व सहित बुझिबा आम पखे संभव नथिला किंतु श्री अरविंदर डिपार्चर परे आमे बुझी पारलु जे मां को ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी टा केते बड़ थिला आ मां कर उपस्थिति टा ए विश्व जगत पई केते बड़ बोन भलिया तो एठी से गोटे दिन दर्शन जेबे हेछि ये दर्शन टी मोस्ट प्रोबेबली होछि अगस्त दर्शन कारण अगस्त दर्शन पर बा नवेम्बर दर्शन ही पर एटा जस्ट प्रीवियस ये नवेम्बर दर्शन सिद्धि दिवस रे दर्शन तो निरोधा लिखुचंती द दर्शन वाज ऑन दर्शन चलची दिन सारा ए वास्ट क्राउड हैड गैदर्ड बहुत लोग आछंती unaware that it would be the last darshan some people were drawn in by an unknown force and later thought themselves specially blessed बहुत लोग के तो भाभी के आसना तेरा लास्ट दर्शन बोली तेनु जे भी से लास्ट दर्शन करिछि से निजकु धन्य बोली मने करछि सेतेबेले there were others who missed it and nourished a lifelong regret किछि जण सेतेबेले मिस करियले आ जानि नांती तापर आउ हबनी तेनु तांको जीवन सारा तांको ई गोटे रिग्रेट रहिला It was mooted at one time whether the darshan should not be postponed, since it might cause a considerable strain and exhaustion, leading to further aggravation of the disease. शिवने को देह खराब था, तथापि he agreed for the darshan. तेणु एटा मन रे गोटे थाई कि आपको पोस्टपोन कर दिया जाऊ टिके आ देह भलो हेले आउ थरे करा जिवो कि कोन करा जिवो. But the proposal was brushed aside out of compassion for the devotees.
सबू डिवोटीज मानक पई करुणा सदृश श्री अरविंद एग्रीड कि मु दर्शन देवी. Everybody, even persons quite ill was given permission. श्री अरविंद कहले समस्त को अलाउ कर दिया जाए दर्शन पे. Everything went off well. The atmosphere was charged with a solemn silence. The mother and Sri Aurobindo were love and compassion incarnate. Light, joy, peace, sweetness, and strength emanated from them, as from the sun and moon. After about 2 hours, an uneasy stir. Di ghanta Sri Aurobindo used to sit in the same position like a statue. Di ghanta re thare tikke siye stir karibe, tikke move karibe. A whisper had gone round that the master would like the darshan to finish as soon as possible. Sri Aurobindoଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ତ ଲୋକ ଆହୁରି ମାନେ ସ୍ଲୋ ଛୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେମିତି. Then in quick steps the long queue passed. जो लोक आगे दर्शन ର प्रक्रिया थिला समस्त टिके छिडा होतले मदर एंड श्री अरविंदो को देखुतले. They used to see them, ସେମାନେ bow down କରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ. सेटा न करा जाए कि सीधा लाइन चलला. एबे जेमति दर्शन मान करू जस्ट द लाइन कंटिन्यूज. सेमति लंबा लाइन अछि, एते लोक अछंती श्री अरविंदो बेस में बसी परिबेनी, समस्त एमति लाइन रे बस लॉन्ग क्यू केवल तांका सामना देकी पास करियो को लागिला. And everyone received the last memorable blessings from him. He came back to his room somewhat tired. It was about 5 p.m. सकाळ दर्शन स्टार्ट हित 5टा बेले उठी की गले. He had eaten practically nothing the whole day. The first utterance he made was, I am very hungry. Shri Aurobindo उठी ऐसे दर्शन रू कहले, I am very hungry. We had never heard such a frank personal note from him before. The meal was quickly served by the mother and taken in grave silence. Silently Shri Aurobindo बसिकी तांका मील टी को खाई देले मां को प्रेजेंस रे. श्री अरविंदो सबले मां को प्रेजेंस रे खांती कारण तांको कोन दरकार मां बढ़ाई दियंती. In the week following darshan, one day when Shri Aurobindo was taking his bath, Purani read out an astrological forecast predicting that Shri Aurobindo would undo himself and that his manifestation would come about in his 93rd year. Shri Aurobindo heard it quietly and remarked, so late as that? Itte deri? We of course took it as one of the biggest of prophecies. But how true was the first part? It was prophetic. पुरानी सुनेले श्री अरविंदो कहले एते दिन बट का संभव हेलानी. ई गोटे लास्ट अकाउंट लास्ट मोमेंट्स श्री अरविंदोंकर. Even after the mother's broad hint, when she left the room and despite clear signs of impending tragedy, I could not really believe that he was going to leave us. We hoped against hope and expected a miracle, knowing very well that such spectacular miracles were not in accordance with the process of Sri Aurobindo's yoga. If he wanted to save himself, he would not have allowed the disease to run its course. यदि श्री अरविंदो को निजको सेव करिवार थांता ताले एते कष्ट से नियंते ही नाही. He would not have allowed the disease to run its course and then dramatically reverse the fatal decree. एते कष्ट पाई की जाय कि हठात किना क्योर है पाई जिबा एटा श्री अरविंदोंकर प्रोसेस ऑफ योगा नो. But one fondly clings to one's delusions. किंतु विश्वास करिवा को इच्छा होतला कि नाही श्री अरविंदो ठीक है जो. That is why we did not inform anyone of the imminent danger. About 10 minutes before the grand end, he called me by my name from his indrawn state. The indrawn अवस्था रे थांती आउ सेही स्टेट भितरु बाहरी आसी से कहिले, निरोध, give me a drink. This was his deliberate last gesture. The quantity he drank was very small, and there was no apparent need of calling me by name. Those last words still ring in my ears and remain inscribed on my soul. Apparently, they express nothing more
than a physical need. But to us who look upon the Mother and Sri Aurobindo as the incarnations of the divine, one word, one look, one touch are rare gifts added to the treasures of the soul. And to me, especially, these few words carried an assurance that he had not forgotten me even in his last moment. এটা কেবল নিরোদ্ধাঙ্ক ପାଇଁ ନଥିଲା, এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଉନି ନିରୋଦ୍ଧା was a symbol. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ନିରୋଦ୍ଧାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ କାହାରିକି ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ it was his last gesture. They were a reminder of the place he had given before that he would never forsake me. After this utterance followed the final plunge. At 1:26 a.m., leaving his physical seat, the colonist from immortality departed from the earthly habitation in the presence of the mother who stood near his feet with an intense penetrating gaze, an incarnation of divine strength, poise, and calm. Immersed in silent, incommunicable grief, we sat by his immobile body. It seemed to have lifted my pall of gloom, and I felt light and happy without knowing why. When the mother came, I asked naively, "Mother, won't he come back?" "No," she replied. "If he wanted to come back, he would not have left the body." Pointing to the light, she said, "If this supramental light remains, we shall keep the body in a glass case." Alas, it did not remain, and on the 5th day, on the 9th of December in the evening, the body was laid in a vault. एते कष्ट, एते संघर्ष, एते पीड़ा कहा पाई? कौन करथले श्री? Was he just bearing the physical stress by the disease? Na. These were all attack of the evil forces generated from the world. तो एबे आम पाखरे श्री अरविंदन को कृतज्ञता जणेबार मार्ग कोन हेबा दरकार? कोन मीन करछि श्री अरविंदन मार्ग रे चलीबार माने? कि we stop the entire humanity taking this pain. How can we make others' life more easy? How can we be of any help to others? जे आम समस्त एते कष्ट सहिले आमे जदि जगतर पीड़ा ये जगतर जंत्रणा को दूर करने टिके भी कहार पीड़ा जदि आमे सहन करि परिबा, निजको टिके भी कष्ट देकी जदि आमे कहार कष्ट हरि दे परिबा, ताले याठु बड़ कृतज्ञतार भाव आ किछि नहि पारे। आ हमकु कहा पई किछि करिवार इगोलेसली सेल्फलेसली कहा पई किछि करिवार जदि सठिक मार्ग जदि जानिबार अछि, ताले एकमात्र सावित्री। सावित्री ही सब मार्गर मूल, सावित्री ही पाथ, सावित्री ही डेस्टिनेशन। चेतनार आमे जेते ऊर्ध्व को बढ़िबा, अचेतनार ऊर्ध्व को बढ़िबा पे एकमात्र मार्ग होची सावित्री। तेनु सावित्री अध्ययन द्वारा सावित्री लीडर्स फाउंडेशन रो जो छोटिया भी हमर ए अति क्षुद्र गोटे स्टेप जे आमे सप्ताह रे थरे हेले बसी की सावित्री पढुचंती, सावित्री विषय आलोचना करूचंती, आमे समस्त निजको प्रस्तुत करूचंती गोटे विशाल दिवस पाई, जो दिन की समस्ते कहार ना कहार किछि गोटे कार्य रे लागि परिबा। आ प्रभुंकर जो स्वप्न अछि ए जगत रूपांतरित हेबो, से सब आमरी द्वारा चैनलाइज्ड हे कि दिने ये अर्थ निश्चय ट्रांसफॉर्म्ड हेबो। ए प्रार्थना सहित we will close with a silent prayer. Meditation will be a silence one. तो आमे गोटे मिनिट में साइलेंट रहिबा and then we will close today's session. मां को पाखरे श्री अरविंदन को पाखरे हमर अशेष अशेष कृतज्ञता और प्रार्थना जे आम समस्त को ए मार्ग रे सी ही बाट कढे कि नै जानतु, तांकरी करुणा तांकरी कृपा ही हमर एकमात्र ध्येय हो। एति सहित we will close today's session. Thank you sir.